تشبیہات اس تالاب کے سمندر میں لہروں کی سی طرف اور سیماب کا سا اضطراب نظر آتا جن سے وہ حکمت اور ذوق آگہی کی کوپلیں ہم وقت پھوٹی اور کھلی رہتی دریائی وقات تاریخ عالم گواہ کہ دنیا میں جتنے بھی مشاہیر ہو گزرے انہوں نے شبانہ روز کی محنت جہد مسلسل اور عمل پہن کے ساتھ حالات کی نبض پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھا اور محض افکار و تخیل کی بلند پروازوں اور کاغذی گھوڑوں کی ٹاپوں پر انحصار نہ کیا بلکہ سلیقہ تدبیر و شعر سے حالات کا رخ آج اقوام عالم کا نقشہ ٹھیک ہمارے سامنے بھائی آئی وقت ذرا گرد و نواز میں نظر دوڑائی سورج چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال کر انہیں زیر تاب لایا جا چکا ہے سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کو کھنگالا جا چکا ہے کوہ دمن کا دل جیت کر دولت حاصل کرنے کے ڈھنگ آزمائے جا رہے ہیں ترقی و عروج اور جہان تازہ کی ریتی کی ارتقائی منازل طے کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب اور آزادی کے پہلے بے قرار زندگانی کی حقیقت کو من کے دل سے پوچھ جوئے شیرہ و پیشہ و سنگے گرا لیسا للانسان الا ما سعى یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یعنی وہ قرآن پاک میں وہ کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تارے پڑے ہیں اور یہ حقیقت بھی کسی دانشور سے پنہان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو بیان جسے آپ اپنی حالت تو پھر آج ہم نے اپنا مستقبل مغربی آقاؤں کے پیروں میں کیوں رکھ دیا آج ہم نے اسلحہ گولہ بارود اور ذرائع نقل و حمل نے ہماری آنکھیں کیوں بچا دی آج زمانے کے چند بڑے بڑے چودھری ہم پر کیوں مسلط ہو گئے ارے آج خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں یہ کاسہ ہے گدائی کیوں بات صرف اتنی ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے اذہان کو گودا اندیشی مفلسی بے حسی اور قرضے کمر پر اٹھ جانے کے غبار کی اتنی تہ سب کر دیا ہے کہ ان کے اجرا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی غرض ایک آئے نو سے ڈرنا اور قرضے کہن پہ اٹھنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے آج اس جہان تازہ کے راستے کسی ایسے مسافر کے قدم سننے کے لیے بیتاب ہے جو اخبار تازہ سے جہان تازہ کی نمود کرے آج یہ راہیں منتظر ہے کوئی جو سب کو خشک کے ہے کوئی جو سب کو خشک کی انوریت سے جان چھڑا کر افکار تازہ کی بنیاد رکھے ہے کوئی جو سب کو خشک کی جان چھڑا کر اقتصادی تبدیلی اور اصلاحی زاویوں کو سامنے رکھے ہے کوئی جو خوشحالی کی دنیا آباد کرے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہے بہرے خودی میں ابھی پوشیدہ تصویریں کھلتے نہیں اس ملزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب قلیمی سمجھ جب تک تو اسے ضرب قلیمی سمجھ
welcome to Sarwar Hassan, who belongs to DPSM College, Bukhara, Boys, whose topic of speech is Iqbal's philosophy of self-help. Mr. Sarwar Hassan. President, respected teachers, and my dear audience, Assalam. Today, I have the profound privilege to tell you the transformative philosophy of self, as eloquently expressed by the poet philosopher Allama Muhammad Iqbal. Iqbal's philosophy of selfhood is an ideology that transcends the boundaries of time and space, rooted in the rich tapestry of Islamic thought and philosophy. It is an invitation to explore the depths of our own souls. At the heart of Iqbal's philosophy lies the belief that every individual possesses a unique and divine essence, a reservoir of potential waiting to be unlocked. He urges that human spirit is not a passive observer of life, but an active, creative force, capable of shaping its own destiny. Iqbal calls upon us to elevate our selfhood to such heights that even God himself inquired about our desires before shaping our fate. It is an exhaustion, proactive and assertive shaping of our lives. To achieve this state of selfhood, Iqbal calls for self-awareness and self-realization. Self-realization is about pursuing your dreams and passions with unwavering determination. It's about setting meaningful goals in life and actively working towards them. It's about understanding that success is not solely defined by external measures, but by how fulfilled you feel in the pursuit of your ambition. Self-realization is about shedding down layers of conformity and societal expectation. It's about being true to yourself and not compromising your values for the sake of fitting in. Iqbal's philosophy of self extends far beyond individual growth. He envisions selfhood as a collective force that drives positive change in society. It's not just about personal success, but about using our empowered self to contribute to the betterment of the world. In our contemporary world, marked by rapid changes and multifaceted challenges, Iqbal's philosophy remains as relevant as ever. It teaches us to have the courage to explore the depths of our own souls, to understand our unique strengths, and to utilize them for the benefit of humanity. In conclusion, Iqbal's philosophy of self is a guiding light that encourages us to reflect deeply on our inner selves, our strengths, weaknesses, and latent talents. By gaining a profound understanding of who we are, we can unleash our dormant powers and work towards self-improvement and self-actualization. Let us heed Iqbal's call to elevate ourselves, and in doing so, elevate ourselves as those around. अब मैं दावत देता हूँ मास्टर मोहम्मद अवैस को। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज फ्लोरा लाई से है कि वो स्टेज पे आए और आज की तकरीब में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। इनका मौजू है कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। मास्टर अवैस। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वो क्या गर्दन था कि जिसका है टूटा शायर मशरिक़ हकीम तर्जुमान हकीकत अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमान नौजवान से मुखातिब हैं कि
मुस्लिम नौजवान अपनी मंजिल को फरामोश करने वाले, जमूद और गफलत के मरज में गिरफ्तार, तूने कभी सोचा भी नहीं, गौर भी किया है, अपनी मौजूदा हालत से सबक भी सीखा है कि तू किस बुलंदी पर महवे परवाज था, तुम्हारी इज्जत का मकाम क्या था। एक वक्त वो भी था कि तुम्हारे कदमों में शान कचला के ताज पड़े हुए थे, तुम्हारी अजमत को देखकर बड़े बड़े मखलूक और काहिर हुक्मरान की गर्दनें झुक जाया करती थी। कैसर और किस्रा तुम्हारे नाम से लर्जा पर नाम थे, तूने पहले जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए थे। तुम्हारी आजान की आवाज यूरोप की वादियों में गूंजती थी, तू शहादत में मखलूक और मकसूद मोमिन का नंबरदार था, तेरा नारा लाल नजर से मुशाबे था, तेरी हैबत से बाहर सिमट कर भाई बन जाया करते थे। तेरा मकसद हमारे गनीमत का हसूल था, न ईश्वर खुशाई की वजह से। तुम्हारी इज्जतें थी और था रुतबा था शानें थी, तुम्हारी इज्जतें थी और था रुतबा था शानें थी, तुम्हारी बात थी अहकाम से कहना था आने थी, तुम्हारे जिक्र में सरगर्म दुनिया की जुबानें थी, तुम थे जमाने में तुम्हारी दास्तानें। वो कौन सा आसमान शोहरत था जहां तुम्हारी अजमत का आफ्ताब तलक्षण न था, कायनात की नजरें तुम्हारी अजमत की आबोताब से खीरा हो रही थी। तुमने कभी गौर भी किया है कि क्या वजह थी कि गद्दों ने तुझे सुरैया आसमान की आंख में जमीन पर दे मारा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी अजमत छीन ली गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कहाँ गया वो रोबो दबदबा, वो जाहो चला, ये सब तुझसे छीन कर अक़वाम गैर को क्यों दिया गया? इसका जवाब कि तूने अहकाम इलाही से रुगर्दानी की, असलाफ की रविश को भूल गया, बात असमूद हक़ जमीआहुम वला तफ़रक़ू के सबब को फरामोश। आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा क्यों हुआ, दुनिया में रुसवा क्यों हुआ, दुनिया में रुसवा क्यों हुआ। ये कुदरत का कानून है कि जब कोई कौम इस काबिल न रहे कि उसूल कुदरत पर गामजन हो सके, तो उस कौम को इक़्तिदार से महरूम कर दिया जाता है। अल्लामा इकबाल इस नजरिए को इस तरह बयान करते हैं कि मैं उस दिन का तसव्वुर करके काम करता हूँ जब मेरी कौम को जाहो जलाल से महरूम कर दिया जाएगा। ऐ मर्द मुसलमान, तूने अहकाम कुरान से रुगर्दानी करके इक़्तिदार और जाहो जलाल की कुव्वत को खो दिया, लेकिन तू ये ख्याल करता है कि तेरी तकदीर खराब है, तुझे तो तुम्हारे अमाल की वजह से सजा दी गई, लेकिन तू अपने जुर्म पर तकदीर की खराबी का पर्दा डालकर नहीं हो रहा। हालांकि तू अपनी तकदीर खुद बना सकता है, जिस तरह कुरान गुलाम तेरे इस्लाम ने अपनी तकदीर खुद बनाई थी। उन्होंने अहकाम कुरानी और उसवा हसना पर अमल किया, लेकिन तूने इन सब को फरामोश करके गफलत, बेदारती और फितरतपरस्ती को अपना लिया, इसलिए तेरी हालत आज काबिल है। तुझे ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए सदाए कुरान की जरूरत है, तभी तू होश में आ सकता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अगर तू अभी तदब्बुर करे, सोचे, तफक्कुर करे, तो बात कुरान कज़ा और कदर तेरे सर पर अंतुम आराम का ताज मुज़य्यन करने के लिए तैयार है, तेरे लिए लाता ज़न्नत की खिलत फ़ाख़िर। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नाम पर सीखो, वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नाम पर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे अखलाक़ दुनिया में सफ़र सीखो। खुदा के वास्ते है नौजवानों, होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में। तुम अपने हुस्न अमल, हुस्न ज़न और शौक़ इल्म व फन से अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खुशखबरी दे दी है। तो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही गालिबा करोगे अगर तुम मोमिन। Please welcome Mohammad Shafi, Mr. Shafi Jamil from Balochistan Residential College, Dulagai, to express his views on the
Iqbal's philosophy of self-help. Starting with the glorious title of Allah Almighty, who is the most beneficent, the most merciful. Iqbal, the greatest Muslim philosopher and poet of 20th century, had the reflection of a great man even in his childhood. Young man and woman had profoundly drunk at the fountain of his poetry. Mr. President, apart from other countless subjects, he projected and reflected the philosophy of self-worth in the most attractive way to inculcate the spirit of lofty objectives and sublime ideals. Sarojini Naidu, a political activist of India, called Iqbal as the greatest poet of subcontinent, whose poetry has universal appeal. He had a promising career in school and a great command over metaphysics, Persian language and English literature. He was deeply overwhelmed by Iranian revolution. Mr. President, according to the philosophy of self-worth, means the concept of self-realization and self-development. This profound concept was in Persian language and aimed at creating the passion in human being to continue the struggle for lofty ideals and attainment of spiritual satisfaction, self-realization, self-reformation, and self-development. Dear audience, according to the philosophy of self-worth of Allama Muhammad Iqbal, which discloses the secret of natural human instinct of the endeavor from better to best and explore the best possible ways of spiritual progress and connect themselves with divine truth of realities. Your Excellency, the continuity, durability, and secret of self-worth brings the man closer to divine realizations, and the secret of universe becomes unfathomable for him. It's the highest level of actualization and divine truth. In accordance with true and deep concept of self-worth, not only the psychological and biological needs are fulfilled, but also the spiritual needs of liberty, love, kindness, empathy, and creativity. Ladies and gentlemen, since the civilization, man is trying to understand his self-worth, the universe, his aim of life, and objectives. Iqbal has beautifully and intelligently projected the philosophy of self-worth. In the most knowledge-oriented way, it tries utmost to establish a strong bondage between the human and the universe, and obtain the divine facts in the God's ego. Your Excellency, the philosophy of self-worth brings the man closer to divine realizations, and the secret of universe becomes unfathomable for him. Mr. President, the poet of peace tries utmost to release the frustration, hypertension, and anxiety of human beings, to inculcate the concept of self-worth and obtain the divine facts in the God of ego. It's the highest level of actualization and divine truth. Allah Iqbal says, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से तो पूछे बता तेरी रज़त है. Dear audience, man is emancipated from the shackle of self-delusion, self-negation, and self-denial, and wholeheartedly follows the divine line led from spirit, and becomes the most unique individual in every form and manifestation. अपने मन में डूबकर पाया सुराग जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाया सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता never. Through the philosophy of self-worth and profound realization, a person comes closer to God and seeks inner peace, innovative skills, self-realization, and spiritual growth, which is the easiest path of human perfection and divine actualization. Thank you. ख़वातीनो हज़रात, एक मर्तबा फिर आपसे इल्तिमास है कि निहायत खामोशी और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें और अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा लें,
کیونکہ یہ یوم اقبال کے حوالے سے آل پاکستان تقریری مقابلہ ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عائشہ یاسین کو، ان کا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول ہے راولپنڈی سے ہے۔ ان کا عنوان ہے کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مس عائشہ یاسین۔ ہر شخص کی جبین پہ ہے تصور طبی کا، چہروں پہ زندگی کی تمازت کب آئے گی؟ اپنی بےتابیوں کا سبب بھی نہیں معلوم، اپنے کیے کی ہم کو ندامت کب آئے گی؟ صدر کی بغیر کیا یہ عجیب بات نہیں کہ لٹے کارواں کا سرار مطمئن ہے اور کارواں کے لوگ سمانے زیست کے لٹنے پہ رقصاں ہیں؟ اندھیری راتوں سے محسوس تاریخ اندھیروں سے خوشباش، چراغوں کے منافی ہواؤں کے داد رس و ٹمٹماتی لوگے حوصلہ شکن، یہ کون لوگ ہیں؟ صدر جی بغیر یہ کون لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تو کبھی نظریے کے لیے سرحدی بازی لگائی۔ صدر جی بغیر جی ہاں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں دشمن کو لے لیا۔ صدر جی بغیر کھوکھلے ہو گئے اس حوصلے، زمین نگل گئی وزنوں کو، زمین نگل گئی وزنوں کو، آسمان کھا گیا جوانوں کو۔ صدر جی بغیر رشوت و بے ایمانی کا بازار ایسا سرگرم ہوا کہ حوصلہ اور ہمت کا اونچا منار زمین بوس ہو گیا۔ صدر جی بغیر اخلاقی اقدار گر جاتے جب پردے واحد کے گھر کا بل 50,000
about Allama Muhammad Iqbal. As you all know, Iqbal was an optimistic, knowledgeable, hopeful, mujahid, murder-momin, whose poetry holds true today as it was years ago. O star, tell to where has departed Iqbal. Let's give a round of applause to our last English participants. Please welcome Noor Fatma, who belongs to DPS Rawalpindi, to speak on the topic, to have no faith is worse than slavery. रबी शहली सदरी वयसरली अमरी वहलुल उब्दतन min lisani yafqahu qawli. I am thankful to my host for providing me the opportunity to represent my prestigious institution and to express my thoughts and views on a very sensitive, burning and most discussed topic of the time, which was once a major theme of poetry, the dreamer of Pakistan and philosopher, Dr. Allama Muhammad Iqbal. To have no faith is worse than slavery. The witty line is from the Bayat of Allama Muhammad Iqbal. Faith is like Abraham at the stake to be. Self-honoring and God-run is faith. Hear me. You whom this eighth ways so captivate, to have no faith is worse than slavery. Honorable judges, the witty topic itself is obviously sensitive and disturbing in its nature. The faith described by Allama Iqbal is a true and complete self-negation and true submission before the sublime power. Strong faith saves man from disasters and gives protection, just like the faith of Hazrat Ibrahim alayhi salam, who did not care for the burning effects of fire, and believed in Allah Almighty, and thus was saved and protected by it. But dear audience, when the more sensitive issue to be touched upon is, are we faithful enough to the supremacy of Allah? Do we really have faith in Allah? Are we really following orders by Allah Almighty? Are we following Quran and Sunnah? Let me think the miserable conditions of Muslims throughout the world gives me a very clear answer. No, we are not faithful. So we are not free. We are slaves. We are slaves of our selfish desires, slaves of our hunger, our mind, our greed, our power, our supremacy, and the shackles of this slavery become stronger and stronger with the passage of time. We are my dear friends. We are in the same situation as we were in the time when Allama Iqbal was trying to keep away the Muslims from deep slumber, and a much darker, same as Muhammad Ali. Dear audience, see all around in the world. See again and again. What shall we find? We have lost the spirit of Islam. We have lost the love for divine. We have lost the characteristics of our forefathers. We have lost our self-respect. In fact, we have lost our glorious past. You know why? Because we have lost faith in Allah Almighty. Gone are the days when Muslims ruled the world. Gone are the days when Khalifa Umar Farooq was the strongest ruler of the world. In his poem Shikwa, Iqbal gives the examples of Muslim glory to Allah Almighty. By whom were the images of created gods destroyed? By whom were the armies of infidels slaughtered? By whom were the five temple of Iran exterminated? By whom were the armies of Yazbin restored to life? Now, honorable judges, what we are seeing, what is happening around us, how Muslims are being treated in the world. Where is our faith, my friends? Where is our faith? Mr. President, see the examples of our brothers in Kashmir. They have been fighting for a long time. See the examples of our brothers in Syria, in Iraq, in Egypt. What happened to Turkish Khilafat? We lost power. And now most recent war is happening in Palestine. Our brothers are being killed. A great massacre is happening. A new genocide of the present time is taking place in Palestine. In fact, we have turned into idols worshippers. The idols of America, the idols of Europe, the idols of Israel. We are only the silent witnesses of what is happening to our Muslims, brother. What we are doing here, audience, what exactly we are doing? Just posting on Facebook, Instagram, making videos. Is this all we can do? My friends, I am off to the opinion that it is time to recognize the true identity. Only and only then we shall have that freedom and glory again. Mr. President, I shall end up with the lines of Allama Iqbal. How impudent that this man is angry with God. Is this the same man that angels brought to? Man knows the secrets of the universe.
universe, undoubtedly. Alas, he is unaware of secrets of humility. Thank you. आखिर में मैं मिस आयशा इजाज जिनका ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद से है को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और हाउस क्लोज करें। इनका मौजू है कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने मिस आयशा इजाज। जनाब सर वेट फॉरवर्ड थोड़ा सा इंतजार करो बेटे। Assalamualaikum dear audience. We waited for the chief guest to arrive. He just here. That's why the guy is waiting for him. And I request you all to please wait for him. The chief guest of today's lecturation is Mr. Tariq Khan Yadi, Education Commissioner, Islamabad, and he is in charge of schools also. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are deeply honored to have Mr. Tariq Khan Yadi, Additional Commissioner Revenue, Faisalabad Division, to grace our ceremony and our esteemed chief guest. His presence elevates this occasion to new heights. We extend our utmost appreciation for his invaluable time. Welcome, and may this event be a resounding success under his esteemed guidance. आखिर में मैं मिस आयशा इजाज जिनका ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद से है को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हाउस क्लोज करें। इनका मौजू है कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने मिस आयशा इजाज। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर, मौज़ूए सुकुन है, कभी है नौजवान मुस्लिम तब्बुर भी किया तूने। जनाब वाला, तख्लीकी आलम की मेराज पैगाम इस्लाम का मरकजी ख्याल है। वो रवायात क़ल्बो इस्तक़लाल, जुर्रत व बहादुरी, शुजाअत व हौसला मंदी, जवामर्दी और दलेरी, जिंदादिली और खुशकदीरी, रवायात जलीला की पासदारी, निज़ाम कौन की तब्दीली, सुबह नौ की नवीदगिरी, नए जहानों की तलाश, नए दुनियाओं की तमन्ना, जो इस कौम का दुर्र इम्तियाज है। मगर ये कौम इसके फ्यूज़ों बरक़ात से बेखबर, अपने आबाद की विरासत से बेखबर हो चुकी। वो अदारे और मदारिस जो कभी इन रवायात का कटाव थे और इल्म हिकमत का सरचश्मा अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करते थे, मगर आज ये सब के सब अपनी नई नस्ल के लिए ख्वाबे दरिया बन चुके। शायद इसीलिए इस बात को कहना पड़ा, कभी ये नौजवान मुस्लिम तत्तबुर भी किया तूने। वो क्या गद्दू था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। वाला, ये तारीफ का जबर या हालात की संगीनी है, मगर ये बात मुत्तफिका अलैह है कि अक़वाम आलम मुसलमानों के खून की प्यासी है, मगर हमारी ये नई नस्ल इससे बेखबर होकर अपनी रवायात से दूर होती चली जा रही है। ये नजरियाती और बेबसी के चुंगल में फंसी नजर आती है। ये यूरोपी अक़वाम की बाल वरासत की दिल दादा है। ये नई नस्ल को इनके बोझों से दूर करना चाहता है। अहले मदरसा ने नौजवान नस्ल का भला टूटा और इसकी सदा ला इलाहा बेआवाज़ हुई। ये तालिबे ईमान था, इसे नेक ईमानी मिली। ये साहिबे ईमान था, इसे नेक ईमानी मिली। इसको आज़ाद की ज़रूरत थी, मगर नेक हिंदी मिली। ये सबूत का तालिब था, मगर हालत जंगी मिली। हमने नई नस्ल को खुद से दूर, बहुत दूर कर दिया, जो इसकी पहचान थी, जो इसका दुर्र इम्तियाज था। जनाब वाला, की जरूरत है जो अपने सोल जिगर से जवानों को पीरों का उस्ताद करे, जो कुव्वत इश्क़ से हक़ को बाला कर दे, जो दहर में इस पे मोहब्बत से उजाला कर दे, जो सबको एक ही सफ में ला खड़ा कर दे। फिर वो नौजवान जो फ़लसफ़ा खुदी की जिंदगी से शबे तारीख को सहर करेगा और खबरदार करता रहेगा कि छुपा गया आसीम में बिस्तियाँ रखी है गद्दू ने। फिर वो अपने ख़यालात से दिल मोमिन को ये बताएगा कि वतन की फिक्र करना मुसीबत आने वाली है। जनाब वाला, मैं इस नौजवान की मुंतज़िर हूँ। चुनाव पीली और बेयकीनी के इस आलम में उम्मीद की किरण दिखाएगा कि गद्दों को थामेगा। यही वो आ गई से अक्ल और शौक़ से हम लोग कल से हिम्मत और तनाई के साथ धीरे नूर को रोशन करेगा। मैं इस नौजवान की मुंतज़िर हूँ जो इस कौम में खुदी की रूह फूंकेगा। पूछ इससे के मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिबे मंजिल है या भटका हुआ राही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेब भी लड़ता है पुकार। Dear audience, that was a representative of the DPS main campus. We have different students who participated from the whole country and had different topics of Iqbal's thoughts, which he threw light upon in his poetry. I would like to thank the audience for outstanding patience and would request the judges, both English and Urdu, for the compilation of the results. Meanwhile, put your hands together for the young performers of the choir.
Now I would like to request our Chief Judge of Art Contest, Mr. Niyaz Hussain, ACM Tandiawala Campus, HOD Art DPS, to announce the results of Art Contest that was held in our other section. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ पोजीशन के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ मिनहाल चेन्योड इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे अब्दुल्ला आबिद DPSC ओकाड़ा, और सेकंड पोजीशन के लिए हारून खान बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई, और फर्स्ट पोजीशन के लिए मोहम्मद हाशिर चनाब कॉलेज जंग। थैंक यू। अब मैं तहतुल लफ्ज़ के मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम मुंसिफ़ आला जनाब डॉक्टर आसिफ ऐवान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तहतुल लफ्ज़ के तलबा और तलबात की पोजीशंस का ऐलान फरमाएँ। जनाब डॉक्टर आसिफ ऐवान। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया वो सब मुबारकबाद के अहल हैं। कंपटीशन में हिस्सा लेना जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है और सभी स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी। ताहम ये कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अमंग द इक्वल्स बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सबसे पहले कंसोलेशन प्राइज़ के लिए हाफिज़ मसाब DMC फैसलाबाद से। थर्ड प्राइज़ अली अब्बास DPS एंड C ओकाड़ा बॉयज़। सेकंड नंबर पे 2 स्टूडेंट्स आए हैं, कैडेट हाफिज़ कासिम कैडेट कॉलेज फतेहजंग, और दूसरे स्टूडेंट का नाम है रामीन फातिमा DPS एंड C ओकाड़ा गर्ल्स। और अब बारी है स्टूडेंट की जो इस कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पे आए हैं, रोशन फातिमा मलिक खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज खानेवाल गर्ल्स। बहुत शुक्रिया। Now I request Professor Rehan Gul, Head of Department of English, Government Teachers Training College, Faisalabad, who is also the Chief Judge of today's English Declamation Contest, to please come on stage and announce the results of the contest. Bismillahirrahmanirrahim. Tremendous potential rendered by all the participants. Magnificent performance, speaking technicalities, wonderful performance.
very commendable. So I would like to declare results for English declamation. First position goes to Chenab College, Jhang girls. Arshia Hussain. Second position again goes to DMC Faisalabad girls. Iman Rashid. Arshia gets first position. Iman Rashid from DMC also gets first position. Third position goes to Chenab College Young Boys, Haris Imran. Haris Imran, Chenab College Young gets second position, Haris Imran from Chenab College Young gets second position. Sultan Surur, Lahore Grammar School Boys, clinches third position. Prize of consolation goes to Noor Fatma from DPS Rawalpindi. To wind up, overall performance in English and Urdu declamation trophy goes to Chenab College Jhang girls. Thank you. अब मैं जनाब अख्तर भट्ट से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और उर्दू तकारीर में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात की पोजीशंस का ऐलान फरमाएं। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। जनाब अख्तर भट्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर शाहिद, थैंक यू आज़र और थैंक यू DPS। इकबाल डे मनाया और इकबाल डे पे डॉक्टर आसिफ ईवान को बुलाकर ये साबित कर दिया कि हम इकबाल के मानने वाले हैं, इकबाल के अफकार को जानने वाले हैं। और नियाज़ साहब, रेहान गुल साहब और डॉक्टर आसिफ ने मेरे पे ये ज़िम्मेदारी आयद कर दी है कि इन्होंने अगर 30-30 सेकंड बोला है तो फिर मुझे 90 सेकंड बोलने की इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। सर शाहिद साहब, सुबह आपने इनॉग्रेशन में ये कहा था कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हार हो या जीत, आज एक एक शेर, एक एक मिसरा और एक काम की बात जो इकबाल का फ़लसफ़ा था वो लेकर जाएंगे। और 7 घंटे पर मुश्तमिल ये कंपटीशन दौरानिया था। सब बैठे रहे और इन बच्चों ने कि खुदी के साज में है उम्र जावेदां का सुराग पढ़कर सारी थकान दूर कर दी। अब बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कि तू हुमाक है शिकारी, तू हुमाक है शिकारी, अभी इब्तिदा है तेरी, नहीं मसलत से खाली ये जहां में मुर्ग माही, तू अरब है या अजम है तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। लुग़त-ए गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। आज आपका दिल गवाही दे रहा है कि इकबाल को पढ़ना चाहते हैं। और फिर निशाद साहब की बात को रिपोर्ट करूँगा। इकबाल का एक मिसरा, एक एक लफ्ज़, एक एक ख्याल जो है उस पर किताबें लिखी गई, लिखी जाएंगी, लिखी जाती रहेंगी। जैसे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं 30 उर्दू मुक़र्रिरीन को सुनता। अगर मैं 30 के अगलात की इस्लाह करना चाहूँ तो फिर और टाइम तक होगा नहीं। आपने समाजी राब्ते इस्तेमाल करना है, लेकिन तहकीक के लिए
لائبریری کا رخ کرنا ہے. کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ ڈھونڈنے کی ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. آپ نے اس عشق کو جاری رکھنا ہے. اقبال کے پیغام کو آپ نے سننا ہے، پڑھنا ہے. لغت جو ہے اس سے استفادہ کرنا ہے. فرہنگ آصفی آصف صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس سے استفادہ کر لیا جائے، اور اگر کوئی کچی ہے کا جدائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا قصور ہے، میرے ٹیچر کا قصور ہے. ہم اپنے بچوں کو اس عہد میں لے آئے ہیں جب ہم نے ایک کو کھکھا کہنا شروع کر دیا. بہت سارے بچوں نے جو ہے خودی کو خودی کہہ دیا، غلامی کہہ دیا. اس طرح سے گاف اور غے کا فرق، تو خیر غے کا فرق یہ ہم نے دیکھنا ہے. آئندہ جب بھی آئیں گے، جس ملک پر آپ جائیں گے، آپ اس کا خیال رکھیے. اب بات کرتے ہیں. آپ کو ہم نے 7 گھنٹے سنا، اور اس کا نچوڑ یہ تھا. میڈم طاہرہ یاسمین میرے ساتھ شامل تھی. حوصلہ افزائی کا انعام جاتا ہے وجیح عبداللہ، اور تعلق ہے چناب کالج چھن سے. اس موقع پر میں جناب میڈم مشرف صاحبہ محترمہ اور سر آپ کی آمد اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اقبال ڈے کو حقیقی طور پر اقبال ڈے بنا دیا. اور ڈی پی ایس کو ہمیشہ سلیوٹ، آپ سب کو بھی سلیوٹ. نوشیروہ ایجاد خان بھٹی، ان کا تعلق ہے ڈی ایم سی مین کیمپس بائے سے. ان کو حوصلہ افزائی کا 4تھا انعام ملا، اور ان کے نمبر جو ہے وہ 97 تھے. جناب کالج والے کی حوصلہ افزائی 97، دونوں کے برابر نمبر. اب آتے ہیں جی تیسری پوزیشن کے حقدار کیڈٹ حذیفہ الطاف واسی. انہوں نے جب سلوٹ کیا اور جھوٹ کو زمین پر مارا تو ایسے لگا کہ جیسے پہاڑوں کو راشائی سیماب ہو جاتا ہے. سنی نا مصر و فلسطین میں وہ اذان میں دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائی سیماب. تو اس طرح کا جوانوں میں یہ ادا ہونی چاہیے. یہی کا جدائی ہے جو ہمیں یہاں تک لے آئی ہے، جو آج بچوں نے باتیں کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہاں پر نشر مقرر کے طور پر 4 ٹاپکس تھے. یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پھر کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کاریمہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. اور یہ میں دیکھ رہا تھا سر کہ یہ 4 ٹاپکس جو تھے اس شعر کی تعبیر تھے کہ قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت، یہ 4 عناصر تو بنتا ہے مسلمان. اور فکر، شعور، بلند نگاہی، بلند ہمتی، جستجو، ذوق طلب، عزم جواں ساتھ رہا. تو یہ بچے ہمارے بولے اور خوب بولے، ہر ٹاپک پہ بولے. لیکن وہ بچے جنہوں نے اپنے مواد میں پولیٹیکل ایونٹ یوز کیے تھے، ان کے ہم نے نیگیٹو مارکنگ کی ہے. کیونکہ کہا گیا تھا کہ کسی قسم کی ہم نے امید کا چراغ جلانا، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ہم نے اس کو ترغیب نہیں کرنی، کیونکہ ہم آپ ہیں تو پاکستان ہے، ہم ہیں تو پاکستان ہے. تو جی دوسری پوزیشن میرب زہرا، اور بھی بولی بچی ایس ڈی ایس اسکول گرلز آگے تھی. اب دونوں کا رزلٹ بنا تو سیکنڈ پوزیشن 105 نمبر، 1 نمبر سے اس بچی نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے. اور وہ بچی وہ تقریر، وہ مواد جس کا انتظار تھا وہ پیش کیا. ایمان علی نے چناب کالج سے 106 نمبر لے کر فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور پھر وہی بات کہ تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، اور پڑھیں آگے بڑھتے چلے جائیں. پاکستان زندہ باد. Now I call upon Professor Ehsan Rahman, Head of Department of English, Division of Public School and College, for taking you through the prize distribution ceremony of today's Art, Allocation and Bilingual Contest. Please welcome Sir Ehsan Rahman. Assalamu alaikum. First of all, I would request the Honorable Chief Guest, Mr. Tariq Al-Jali, to please come on stage to give away the prizes to the winners, position holders, and the champions. Honorable Principal will also be with him.
First award, art competition. Consolation prize was won by Minahil, Chinot Islamic School, College. Minahil, please come and receive your consolation prize. Is she here? Minahil from Chinot Islamic School. Abdullah Ahmed, GPSC Okara, 3rd position. Abdullah Ahmed, DPS Okara, 3rd position, receive your. All right. Later on. So, results of the elocution competition, which we call Consolation prize was won by British Model College Faisalabad Hafiz Basar. Hafiz Basar. All the prize winners, that's the way. You have to proceed from there. Third position was won by Ali Abbas, who belongs to DPS Okara. Ali Abbas. All the position winners, please make a queue there so that the function is smooth. Position holders, winners, please make a queue there. There are 2 second positions in elocution competition, and first second position is Cadet Muzaffar Qasim, who belongs to Cadet College of the Hill. Second position. Muzaffar, Cadet Muzaffar. Are you? Please. Nabil Fatima from DPS Okara, second position. In elocution. And first position in this competition was backed by Roshan Fatima Malik from Khadimah Public School. Now, Urdu declamation. Vijay Abdullah, Chinot College, boys, consolation prize. Vijay Abdullah. Basharma Aizul Khan, Bhatti. Tweedle Model College, main campus, consolation prize. Cadet Muzaffar Altaf Abbas Singh, Cadet College for the Jan, 3rd position. Meerab Zahra is the next name. Lahore Grammar School, 2nd in Urdu declamation. Meerab Zahra to receive her 2nd position of honor in the Urdu declamation. She belongs to the Lahore Grammar School. And first in this contest is Iman Ali from Chinab College, Chinab College, first position in Urdu declamation. Iman Ali.
Now, English declamation. Consolation prize was bagged by Noor Fatima, DPS Rawalpindi. Noor Fatima. From DPS Rawalpindi. Sultan Saboor, Lahore Grammar School, 3rd position. Sultan Saboor to receive his prize for standing 3rd in this competition. Haris Imran is the next name, Chenab College, 2nd in English declamation. Is already announced. There are 2 first positions in this contest. Iman Rashid, Division 1 College, Faisalabad Girls, got first position. Iman Rashid. The other second position is won by Ashia Hussain, Chenab College, first in this declamation. Are the prize winners of the art competition, are they? Okay. Alright. Consolation prize was won by Nahil from Chinyot Islamia School. Please come and receive your prize for having a consolation prize. Abdullah Ahmed, DPS Okada, 3rd in art competition. Harun Khan, Bluchsar Residential College, Doraline, 2nd position in art competition. Muhammad Hashir, Chenab College, first in art competition. On the overall performance in English and Urdu declamation, trophy goes to Chenab College. Please receive your trophy. Team Chenab College, please just come and lift the trophy, Champions Trophy, by the Urdu declamation in connection with the Iqbal Day celebrations. Chenab College, girls, they lift the trophy. Put your hands together, ladies and gentlemen. The trophy won by Chenab College. Now, a souvenir to be presented as a custom
to the Honorable Chief Guest, Mr. Tariq Al-Niazi. It will be presented by our Honorable Principal to the Honorable Chief Guest. And a souvenir for the Principal of Junior Public School and College, Mr. Shahid Mahmood, and it will be presented by the Honorable Chief Guest, Mr. Tariq Al-Niazi. Another round of applause, please. Announcement for the office. Thank you very much, sir. Thank you, Captain. Before I call upon. Okay, please rise for the national anthem. That concludes our today's ceremony. Mr. Principal wants to say something. Sir, thank you very much. DPS and its allied branches will, DPS and its allied branches in Faisalabad will remain closed tomorrow. All right. Officials of the different teams who have won the prizes, please reach here. All the officials, please reach the stage to receive your participation certificates. The officials from different teams receive your certificates and the boxes of the trophies and prizes. We have got boxes, the trophies you've received, we have got boxes also and the participation certificates at the stage. यहाँ आ जाइए आपको मिल जाएंगे on stage. तमाम ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जो है